Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this video lecture I am going to talk about concept of closure. This concept was introduced by Catherine Belsey in her book called Critical Practice, which came in the year 1980. Closure means a sense of completion or resolution to be provided by a writer at the end of a text. कि जब भी राइटर किसी टेक्स्ट को लिखता है तो उस टेक्स्ट को लिखते समय एक राइटर को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से एक टेक्स्ट की एंडिंग करनी चाहिए। कंप्लीट तरीके से एंडिंग का मतलब है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स टेक्स्ट के मिडल में देखने को मिल रहे हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए टेक्स्ट के एंडिंग में। एंड जितने भी क्वेश्चंस जो टेक्स्ट के मिडल में अनआंसर्ड रह गए थे उनका भी आंसर प्रोवाइड करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब रीडर्स एक राइटर के टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो वो बहुत इजीली ग्रास्प कर पाएंगे आखिर टेक्स्ट किस बारे में लिखा गया है। Closure is a mechanism employed by authors to bring a narrative to an end, often tidying up loose ends. How these loose ends are tied up? In this sense, a writer tries to involve or he tries to bring various plot lines all together. So, here in this way, he is able to tie up loose ends and also resolve conflicts in the end and answer unanswered questions. This try to ultimately provide a satisfactory ending to a reader when he is reading work of a particular writer. Let's take an example of realist novels. When they are written by a writer, so they are written in such fashion that their introduction is done by showcasing a world of crisis. And at the same time, these writers writing these realist novels, they try to provide a resolution at the end of a text by re-establishing order which is going through world of crisis, which is confronting crisis. So here in this fashion, a writer always make efforts to re-establish order which is confronting with world crisis. Now, loose ends and providing a sense of satisfaction for the readers. When all these things are tied up in a text, it may provide a kind of satisfaction or satiety to readers who are reading work of a particular writer at a particular period of time. The process of reinforcement of a dominant ideology as the natural end of a text is called as closure. जब भी एक राइटर किसी वर्क को लिखता है तो वो उसे टेक्स्ट की एंडिंग में डोमिनेंट आइडियोलॉजी को दिखा करके टेक्स्ट को नेचुरल तरीके से एंड करने की कोशिश करता है। दिस क्लोजर प्रोवाइड्स आइडियाज़ दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय नैरेटिव मूवमेंट्स और इंसिडेंट्स एंड दीज आइडियाज़ नेचुरली बिल्ड्स डोमिनेंट आइडियोलॉजी इन अ टेक्स्ट। क्लोजर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एम्फिसाइज करता है जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो टेक्स्ट में हमें डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं एंड ये आइडियाज़ टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट नैरेटिव मूवमेंट्स या इंसिडेंट से कंस्ट्रक्टेड होते हैं जो टेक्स्ट की एंडिंग होते होते डोमिनेंट आइडियोलॉजी को बिल्ड करते हैं। Now let's take an example. Suppose a text centers on a temple festival which is to be hosted only by the highest caste, and these highest caste people are Brahmins. So a writer makes ending of a text in such a way that even if a Brahmin person is corrupt, like he involved himself into drinking, woman chasing, but at the end he transformed into an utterly devout Brahmin who makes the festival happen. So the position of Brahmins is considered closest to God and is reinforced in this text again and again, which shows that despite the impurities within the Brahmin men, they all are washed away because that person is a Brahmin. एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल बार बार डोमिनेंट आइडियोलॉजी की तरफ इंडिकेट कर रहा है क्योंकि इसमें बार बार ब्राह्मण्स के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण्स ही टेंपल फेस्टिवल को होस्ट कर सकते हैं एंड चाहे वो कितनी भी करप्ट एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, अगर उन्होंने अपने आप को
पूरा डिवोट ब्राह्मण बना लिया है तो उनकी सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा एंड उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टेम्पल फेस्टिवल को होल्ड करने की, क्योंकि वो ब्राह्मण्स है इसलिए उनकी इम्प्योरिटीज़ को माफ़ कर दिया जाएगा, नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज क्लोजर, जिसमें डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ पर एम्फेसाइज किया जाता है एंड ये बताया जाता है कि ये डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट इंसिडेंट्स से जनरेट होती हैं। Closure suggests the idea that the story and the narrative movements in a text construct a position for the readers that reinforces a dominant ideology. Whenever a writer writes a text, he incorporates such kinds of narrative incidences which holds some kind of position. Like I gave you example of Brahmins hosting temple festival, so only they are given opportunity to host temple festivals, and Brahmins are again and again emphasized in a particular text which holds and which means that they hold some kind of position. So these are incidences. Talking about Brahmins hosting temple festival is a kind of narrative incidents which holds some kind of position, and this may automatically lead readers towards a dominant ideology. तो इससे क्या होगा, जब ब्राह्मण्स पर बार बार एम्फिसाइज़ किया जाएगा तो एंडिंग में अपने आप आते आते एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी बिल्ड हो जाएगी, जो हमें एज रीडर्स को ये बताएगी कि इस पूरे ही टेक्स्ट के अंदर ब्राह्मण्स पर ज़्यादा एम्फिसाइज़ किया गया है कि उनका हमारी सोसाइटी के लिए कितना असेंशियल रोल है। देन closure is an important aspect of literary and cultural text, as it allows readers to make sense of the narrative and derive meaning from it. And it ultimately provides a sense of satisfaction and fulfillment by tying up loose ends, which again brings up a sense of closure to the reader's experience. So in this way, closure is an important aspect or feature of literary and cultural text. Then closure can be problematic in a sense because it can perpetuate dominant ideologies and suppress alternative readings or interpretations. So that is why it is problematic. Then this act and this closure is a type of act which forms ideological control because it limits the reader's ability to critically engage with the text, keeping their major focus only on dominant ideologies. इस तरीके से एक क्लोजर एक इस तरीके से एक्ट करता है कि कहीं ना कहीं लोगों को, रीडर्स को आइडियोलॉजिकली कंट्रोल भी कर लेता है। वो किस तरीके से, क्योंकि क्लोजर का ये जो कॉन्सेप्ट है वो रीडर्स को एम्फेसाइज करता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी पर ही फोकस करना है, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। तो इससे क्या होगा, लोगों को आइडियोलॉजिकली कंट्रोल किया जा रहा है। Then dominant ideology present in the text and its underlying themes. So that is why this closure as a concept acts as a form of ideological control. Then closure can also be deceptive in a way because it blurs the inconsistencies, contradictions, and complexities inherent in literature and society. It provides an artificial sense of resolution by masking the unresolved tensions and conflicts that exist in a text and in reality. So this can lead to false sense of understanding which prevents the reader from engaging with underlying issues and complexities of the narrative. डिसेप्टिव का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से लोगों को या फिर लोगों के साथ, रीडर्स के साथ धोखा भी कर रहा है, क्योंकि इसके थ्रू जितने भी सोसाइटी में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो सारी ब्लर हो जाती है, तो लोगों को पता ही नहीं लगने देती कि आखिर में वाकई में सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटीज़ है या नहीं।
एंड जितनी भी टेंशन्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको मास्क कर लिया जाता है, उन्हें हाइड कर लिया जाता है बिल्कुल। तो इस तरीके से लोगों को इस सोसाइटी की सच्चाई नहीं पता लग पाती, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से डिसेप्टिव रोल भी प्ले करता है। Closure presents gender implications as well, as it reflects and perpetuates patriarchal notions of order and completeness. It is associated with male gaze and perspective and reinforces traditional gender roles and power structures. It limits agency and voices of marginalized groups and encourages people to only focus on dominant people as well as their ideologies, and it at the same time suppresses alternative readings and interpretations that challenge dominant ideologies. So, in this way, this concept of closure presents to us gender implications. This concept of closure highlights the ways in which narratives shapes our understanding of the world and the ideologies they propagate. It encourages readers to critically question the closure they encounter in text, exposing the ideological biases that may be present and opening up new ways of interpreting and engaging with literature and culture. This closure, this concept acts as a kind of critical lens which tells ways to examine how literature and culture construct and perpetuate meaning. Belsey encourages readers to critically engage with narratives and question the dominant ideologies and power structures, and this concept at the same time helps readers to uncover complexities, contradictions, and allow them for alternative readings that exist in both literature and society. Now, with this video lecture ends here. Hope this video lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you.